Hi, sir. How are you? Sir, your mic is off. Hi Sakshi, hi everyone. Please don't call me sir. इतनी जल्दी इतना बड़ा मत बनाओ मुझे प्लीज. Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm great. I'm great. So let's So nice start. to see so many people. Yes. Yeah. So hi everyone. My name is Ananya Shukla, and most of you are here to know about how to start a travel company. And I think if this is a sector that you really want to get into, this is something that you want to do, I think you need to hear some stories. And I'm here with some stories. I'm not just going to tell you कि तुम्हें एक company कैसे start करनी. I'm going to tell you कि एक mindset क्या required होता है to start a travel company. And most of you are from DU, I'm guessing. सब लोग दिल्ली में हैं अभी या सब घर से अभी पढ़ रहे हैं. सब अभी दिल्ली में ही है. सब दिल्ली में. Perfect. तो हम तो फिर आगे मिलने की भी planning कर सकते हैं सब लोग. तो चलो. Let's talk about how my journey has been. And I think मेरी journey बताना इसलिए important है because it's a very ordinary boy story, and if I can start something of my own, I think everyone can, I feel. तो बहुत जल्दी से summarize करते हुए I'll try and tell you my journey. I was a mechanical engineer, and मैंने major mechanical में किया था, minor was in finance. So I entered into the finance sector because obviously mechanical में पैसे उतने नहीं थे. That was my mindset when I finished engineering कि there is more money in the finance sector, the work is probably more fun. So let's head to finance, and I joined Goldman Sachs, which is an investment banking company. I worked there for 3 years. Then, after 3 years, I sort of realized that this is not something how I want to be defined as. And then I quit my job during second wave of COVID. Now, since all of you are in the tourism industry, you would understand that quitting your job during peak wave of COVID for a sector called travel is probably the most stupid thing you can do when you're looking for stability in life and you're looking for money in life, because travel industry was completely shut at that point. But for me personally, I had realized कि हाँ, this is when I'm feeling it, and now that I'm feeling it, I will go for it. So वो एक चीज था मेरे दिमाग में. That's when I quit my job. Now when I quit my job, I obviously did not think कि यार I have to start my own travel company. When I quit my job, in my mind, I just had a few things that I will probably start a travel channel, do travel show hosting and all of that, and then eventually figure out कि life में क्या करना है. So when I quit my job, I started volunteering. I went on a few group trips, जो कि कुछ companies organize करती थी, travel companies, and they organize these group trips throughout India. And I went on 3 such trips back to back because I really enjoyed meeting new people. And then post that, I realized कि यार मेरा travel industry में कोई resume है नहीं. There is no portfolio that I have in the travel industry. Then how do I even apply for anything? How do I get roles? How do I get anything? So I started traveling. I was in Mulki, which is in Karnataka, for a month at a surf school, and I volunteered there for a month. Now all of this was to build my portfolio, to tell people कि हाँ मैंने travel किया है, मेरे पास experience है. और when I went to Mulki, I volunteered there as a photographer, content creator for them, and मुझे photography का P भी नहीं आता था तब. I did not even know how to click pictures from a DSLR. At max, what I could do is उसको auto mode पे डाल के I would just click pictures. That is how my journey started, trying to tell them that I know photography. And while I was there for a month, I learned photography. I developed that skill, and then eventually और जगह एक्सप्लोर करी. I started traveling solo, started building my Instagram content creation, वो सब शुरू किया. And then eventually trip leading came as a blessing to me, wherein someone who I had gone on trips with, the owner of that company, offered it to me. That I sort of had like a slight people connect, so he was like, "You can manage people and come lead a trip for us." So I led a few trips for some other company. 7 trips I led for them. And then eventually, once I started understanding the market and once I started knowing my own purpose, that the kind of impact I want to create, I shifted to my own travel company. Now, the point of this entire journey is just that अगर आपको अभी लगता है right now that you don't have the skill sets to start a travel company, you don't have the skill set to become a content creator, you don't have the skill set to make it big in the travel industry, do not let that define you, because nobody is born with these skills. Now, if any one of you does photography over here, just know कि जब भी आपने start किया था photography, उस time पे कोई आपको talented नहीं बोलता है. Once you pick that up, once you start learning, once you know the intricacies of how to click a picture, उसके 1-2 महीने बाद people will start calling कि हाँ ये तो बहुत talented photographer है. Now, talent as a word is ideally a myth, right? Like, because nobody's born with these skills. These are skills that you developed while
ट्राइंग योर हैंड्स ऑन इट, या तुमने किसी से सीखा, तुमने वो डेवलप किया, तुमने हार्ड वर्क किया उसके अगेंस्ट, एंड देन यू लर्न दैट आर्ट. So today, if someone tells you that you're not talented enough to do anything, to start your own company, to learn a new art, ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत कुछ है. इट्स नॉट जस्ट स्टार्टिंग अ ट्रैवल कंपनी. सो इफ यू फील राइट नाउ कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है कुछ करने के लिए, just say a big no to that thought, because whatever skill set you try and learn, तुम उसमें talented कहलाओगे कुछ टाइम बाद. मतलब किसी को talented बोल देना, I personally feel कि मतलब तुम उसके हार्ड वर्क और स्किल सेट का मजाक उड़ा रहे हो. That person has worked hard for it and you can work hard for it. You can pick up any instrument today. You can pick up, मतलब सिंगिंग जैसी चीजें थोड़ी मैं मान सकता हूँ कि उसमें थोड़ा टैलेंट चाहिए होता है. You then have to develop that voice, but apart from that, I think everything you can develop and become talented. तो चलो आते हैं, आई थिंक थोड़ा बात करते हैं ट्रैवल कंपनी कैसे स्टार्ट करते हैं. हाउ आई स्टार्टेड माय ट्रैवल कंपनी. सो आई हैव नॉट डन एनी सॉर्ट ऑफ एमबीए. मैंने टूरिज्म सेक्टर में कोई पढ़ाई नहीं करी है. द ओनली थिंग दैट आई हैड इन माय फेवर वाज that I was in the travel sector for some time. I led trips for other companies. I had traveled quite a bit solo. मैंने अपना portfolio को develop किया था photography में, traveling में, Instagram में काफी अपनी प्रोफाइल डेवलप की थी एज अ कंटेंट क्रिएटर. एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड माय ओन ट्रैवल कंपनी बिकॉज आई वांटेड टू लीड ट्रिप्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. एंड जो मेरी कंपनी भी है फिरगुन ट्रैवल्स, वी लॉन्च्ड इट इन अप्रैल लास्ट ईयर एंड वी स्टार्टेड our trips from July last year. So it's not even been 1 year, it's been 7-8 months that we've been leading trips. We've done approximately 18 to 20 trips since then. And I just want to tell you that it may sound very scary to start a travel company. To start anything of your own in life, initially it will look very scary to you because you have a plethora of people in front of you who have done their own things, who have developed that art. उन्होंने अपना industry, अपना business बहुत ज़्यादा build कर लिया, and वो चीज़ can scare you a lot because you are starting from scratch. But I want you to think, I want you to now just shut everything. चलो next half an hour, 40 minutes that we are here, let's just forget every other thought and try and understand कि you want to get into the travel industry or not, whether you want to start your own travel company or not, या तुम्हें कुछ और करना है. ठीक है, लाइफ के बारे में बातें करते हैं, कंपनी से बारे में बातें करते हैं. So when you feel that you want to enter into any such sector, just know starting में बहुत tough होगा, बहुत tough होगा, because you will not see results immediately. तुम एक कंपनी जब सेटअप करते हो, it's like your own kid. Your own kid will not start running from day one. Your kid will crawl, your kid will fall, your kid will learn all of this, and eventually after a few years that person will start walking. Eventually they will start running, and उसके बाद वो अपनी finish line तक पहुंचेंगे. But this entire journey from walking on the floor to crawling to standing up to running, that is what your passion should be. That is where your effort should be. ये पूरी जो journey होती है, that is what defines you. तो right now, I think everyone, since you're in college, what you should focus on majorly is to build up your portfolio in the travel sector. Starting your own travel company directly out of college is not something that is very ideal. It's not something that will work for almost everyone. वो 2-3 लोगों के लिए काम कर सकता है अगर 100 लोग हैं यहाँ पे. What I will suggest you is gain as much knowledge as possible initially. Understand how the sector works. Understand कि कोई कंपनी जब ट्रिप्स पे ले जाती है किसी को, तो उसके पीछे क्या क्या रिक्वायर्ड होता है. You can have amazing intentions, but with just those intentions you can't build a company. आपको अपनी ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करनी है तो there will have to be a lot of research, there will have to be a lot of hard work, there will have to be a base setup that you will need. Now our company, what we do is we organize group trips currently across India and abroad. हमने इंटरनेशनल भी शुरू कर दिया है, डोमेस्टिक वी कीप टेकिंग ट्रिप्स एवरी मंथ. 2-3 ट्रिप्स हमारी होती हैं. वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ अदर ट्रैवल कंपनीज जिनका हर वीकेंड एक डिपार्चर होता है एंड देयर आर ग्रुप्स गोइंग, because what we focus on is human bonds and friendships that we want to develop on trips. Now that is our purpose over here. So right now, sit back, ask yourself, what is the purpose behind you starting your own travel company or you entering into the travel sector? Because having that set purpose in your mind is very important, because तुम्हारा एक विजन तो वो होता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है. उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. You can have 100 different paths towards that end goal, but you need to have that end goal right now. Having said that, you don't have to stick to that end goal. You can keep pivoting from your main decision. अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हारी कंपनी का पर्पस है ये अचीव करना, once you start into that sector, जब तुम घुस जाओगे इस इंडस्ट्री में, you will realize कि यार शायद ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा. Maybe I have to take a slightly different path. Be open to that. Don't have to be rigid when you start your own travel company कि हाँ मैंने ये सोच लिया, मैंने दुनिया को ये बोल दिया, मुझे यही अचीव करना है. That is not how it's going to work. You will have to make changes, you will have to adjust, you will have to
keep shifting your purpose whenever needed, but starting without a purpose is not going to help you. बहुत बॉलीवुड साउंड करता है कि हाँ बस आप निकल गए एंड कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो. रियल लाइफ में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है व्हेन यू वांट टू बी सक्सेसफुल एज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज दिस इज ट्रीट दिस एज अ बिजनेस. बहुत लोग कहते हैं कि इसको बिजनेस की तरह नहीं समझेंगे. वी आल्सो गिव ऑल आवर हार्ट टुवर्ड्स आवर ट्रिप्स, बट at the end of the day it is your business and you have to treat it like that. So have that thing in your mind, know a purpose of yours. अगर आपके दिमाग में पर्पस सेट है कि मुझे ये अचीव करना है, then you can start walking. You will have a direction in which you can walk. One more thing that I want to tell you right now, जो मैंने चीज बोली थी, that when you start a travel company, when you start something of your own, right now, if any one of you wants to be an Instagram content creator, you will open Instagram, travelers को देखोगे तुम, you will get shit scared कि इनके millions of followers हैं. They are posting crappy content and it's getting viral. कोई कुछ भी post कर रहा है, कोई ये सब डाल रहा है, and they're getting viral. They're getting millions of views. They're getting money out of it. Brand collaborations. And when you look at your Instagram page, you will see I have 500 followers. I have 1,000 followers. मेरी reels पे 1,000-2,000 views आ रहे हैं. How am I even going to compete with anyone over there? This is a thought everyone has when they start out. It's not just you. Right now, I want to tell you that your starting point is very different from where that other person is. You are not running a race wherein everyone's starting at the same time. You are running your own race. तुम्हारा starting point may be way behind someone who has all the influence, who has all the power, someone who's already succeeded in this industry. But just know कि उनके लिए भी कभी ना कभी वो starting point रहा होगा. कोई भी अचानक Instagram खोल के उनके millions of followers नहीं होते unless they have paid for it. उसका कोई point नहीं, because that's not when you become an influencer or a content creator. So if you want to start your own journey, just know it will take time. Your journey will take more time probably than anyone else over there. And that's okay, as long as you're willing to put in that effort. That happened with me. I was creating content for very long. And बहुत टाइम तक मेरे 6-7 हजार फॉलोअर्स पे सेट था वो चीज. It was just not increasing no matter what I posted, what I wrote. I'm also a writer, so I write in my captions काफी. And no matter how good, how much effort I tried to put in, कुछ नहीं बढ़ रहा था. Then suddenly one day when I kept posting for a continuous number of times, एक reel which people related to a lot, and that was my own story. That was my own story of me quitting my job and pursuing travel. That got viral. उस पे million views आ गए and all of that happened. From 6,000 that jumped to 12,000 overnight. People started saving that reel, sharing that reel. People wanted to know कि ऐसा क्या हो गया कि कोई इंसान गोल्डमैन से आके ट्रैवल इंडस्ट्री में घुस गया. From that, जब आपकी थोड़ी reach बढ़ गई, from that a few more reels started getting viral. One reel got 6 million views, even though that was probably video wise my least creative effort. उसमें एक वीडियो में मैं बस बोर्ड पे लेटा था, but caption अच्छा था. So people related to it. So this is just about putting in that effort continuously and you will get there. ठीक है? So जब हमने ट्रैवल इंडस्ट्री स्टार्ट करने का सोचा, बहुत सारा कंपटीशन ऑलरेडी था इस इंडस्ट्री में. The company that I used to work for before this, वो 8 साल से इस इंडस्ट्री में है. They've been leading trips. They are becoming like a pioneer in this. बहुत सी और कंपनीज हैं, Capture a Trip है, Wander On है. A lot of these companies have been existing since a long time and they have a strong network on social media, on marketing, सब कुछ उनके पास बहुत पैसा है to invest on all of this. So when we started out, what we did as a travel company is हमने competition देखना बंद कर दिया. हमने लोगों को सिर्फ इतना ही देखा कि हम उनसे इंस्पायर हो सके या उनसे कुछ सीख सकें, but that was it. We stopped looking at what other companies are doing. We stopped looking at what their goals are, how they're leading trips, because we had a vision and purpose in mind कि हमें अपनी कंपनी में कैसे ट्रिप्स लीड करनी है. We wanted to put that human effort कि जो ट्रिप लीडर जा रहा है हमारी कंपनी से, वो इस तरह से बॉन्ड कराएगा लोगों को that people go back from these trips as friends, make memories for lifetime. They open up on these trips. They come from wherever, जो भी उनका बैगेज है लाइफ में, they feel free on these trips. And travel का जो main purpose है, to make people feel liberated, that is what I wanted to give out in my company. And that is what we focused on. हम अपने purpose पे stick रहे. हमने अपनी हर trip पे यही किया. And touch wood, we've had like 100% success rate till now, that not even a single tripper has gone bad sad from artists. We've had 300 trippers approximately in the last 6-7 months. And we were just 2 trip leaders, so it's not like we were having trips every month. हम quantity पे focus नहीं कर रहे थे, हम quality पे focus कर रहे थे. And when you're starting out a company, that is what you need to focus on the most. How to create your brand. तुम्हारा brand is what is going to talk about you. That is what is going to define you. तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा brand है और कुछ नहीं. So जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम शार्क टैंक में आ जाओगे 6 महीने में, तुम अपनी कंपनी का वैल्यूएशन वहां जाके बोलोगे कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 100-200 करोड़ है. दैट इज नॉट हाउ यू स्टार्ट.
You start with having your purpose, you start with building that base, building that brand, एंड ये जर्नी तुम इतना एंजॉय करने वाले हो कि तुम शायद भूल जाओगे उसके बाद कि तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस बनना है. डोंट चेज दैट, यू विल फॉल लाइक एनीथिंग ऑन योर फेस. सो start slow, start steady, know your purpose and stick to that purpose in the beginning, and आप बढ़ते जाओ उस पे. ऑल्सो वन मोर थिंग, कोई भी क्वेश्चंस हो किसी के दिमाग में नीचे टाइप करते रहो, जहां भी है. एंड में Q&A सेशन भी होगा वेयर विल टेक इन क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाटएवर यू हैव. ठीक है. So, I will also talk about slightly, since all of you are pursuing tourism. तो tourism industry में सिर्फ travel company start करना is not the only thing that you can pursue. There are hundreds of other things that you can pursue, and Google and Instagram reels might not always tell you all of this, because once you enter this sector is when you realize कि इसमें क्या क्या है. So I'm going to tell you a little on that. कि once you get into the travel industry, जब आप travel करना शुरू करते हो, first suggestion तो मेरा सबको यही है कि start traveling. That is your biggest portfolio when you enter the travel industry, no matter what you want to do. आपको कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको ट्रैवल शो होस्ट बनना है, आपको ट्रिप लीडर बनना है, आपको कोई हॉस्टल चलाना है, आपको वॉलंटियर वर्क करना है, आपको ट्रैवल एजेंट भी बनना है. इस इंडस्ट्री में अगर आपको ट्रैवल नहीं किया है आपने, यू विल नॉट रियलाइज व्हाट यू वांट टू डू. सो डोंट गेट इनटू दिस सेक्टर कंसिडरिंग कि हाँ ये कोई और कॉर्पोरेट सेक्टर है, मुझे यहाँ पे 9 to 5 करना है. ट्रैवल इन इटसेल्फ, जब आपने चूज किया था कभी लाइफ में इस इंडस्ट्री में घुसना, तो आई एम श्योर आपके अंदर एक पैशन, एक वो रहा होगा दैट यू वांट टू ट्रैवल, दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स. तो डोंट डिविएट फ्रॉम दैट पाथ. अगर आप अपनी जर्नी एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल का जो मेन पर्पस है टू लिबरेट यू, मेक यू फील फ्री, मीट सो मेनी न्यू पीपल, एंड एज लॉन्ग एज you're not enjoying that process, you will get bored out of it, you will get saturated. So एक वो पर्पस, एक वो फोकस अपना हमेशा बिल्ड करना. ठीक है. एंड नाउ टुमारो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ट्रैवल कंपनी, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज्यादा टाइम भी लगने वाला है, इज टू हैव अ नेम. द नेम ऑफ योर ट्रैवल कंपनी इज गोइंग टू डिफाइन एवरीथिंग. इज अब कोई भी ब्रांड भी स्टार्ट करते हो, आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट पीपल हियर और वॉच और लिसन इज द नेम. So you will have to put in that effort in that name, and that effort, that name should define your brand, your purpose behind doing something. When we were thinking about हमारी कंपनी का ब्रांड, we are two co-founders and हम फ्रेंड्स हैं, तो हमने सोचा कि हम क्या नाम रखें ऐसा जो डिफाइन करेगी हमारी कंपनी को. बहुत कुछ हो सकता था हमारे नाम के ऊपर, बहुत कुछ हो सकता था हमारे बारे में, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांटेड टू सेल. वी वर नॉट सेलिंग आवरसेल्व्स हियर. सो वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. एक वर्ड है फिरगुन करके, इट्स अ हिब्रू टर्म जिसका मीनिंग होता है द अनसेल्फिश जॉय यू फील व्हेन यू सी समवन एल्स हैप्पी. That was our purpose. That is something that we wanted to do on trips, that people come on these trips and they bond with each other. एक दूसरे की स्टोरी सुन के, एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करके वो बहुत ज्यादा खुश हो. एंड जब वो किसी और को एक ट्रिप के फर्स्ट डे से ट्रिप के लास्ट डे पर ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखें, खुलता हुआ देखें, तो वो खुशी फील हो उनको. एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू परस्यू. सो वी स्टक ऑन दिस टर्म कॉल्ड फिरगुन, हिब्रू टर्म अगेन. एंड इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता इसका मतलब, बहुत हमें भी नहीं पता था 1-2 साल पहले तक. आई फाउंड इट समवेयर एंड देन आई यूज्ड इट. सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू, फोकस ऑन दैट नेम. एक चीज जो आपको डिफाइन करे, आपकी कंपनी को डिफाइन करे. नाउ अगेन, when you want to enter the travel industry, there are, I think, 900 plus registered travel companies in India. If you will have to, if I ask anyone over here, Aryan, Tanisha, Ajay, Ritika, jitne bhi log hain, whoever is there, 40 people are there. If I tell you to name travel companies, you will probably be able to name 10 to 15 at max. Even though you're from the tourism industry, even though this is what your forte is, आप 10-15 से ज्यादा नहीं नेम कर पाओगे. Now, this is not a sad thing. This is something to be happy about. कि 900,000 कंपनीज हैं, उसमें से सिर्फ इतनी ही हैं जो फेमस हैं, इतना ही तुम्हारा मेन कंपटीशन है. यू डोंट हैव टू compete with all 1,000 कंपनीज टू स्टार्ट विद. ठीक है. तो ट्रैवल इंडस्ट्री स्टिल अ वेरी न्यू इंडस्ट्री. जब मैंने अपने मॉम डैड को बोला था मुझे जॉब क्विट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज ट्रैवल इंडस्ट्री में पैसे कैसे कमाते हैं. दे बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो ऑब्वियसली उनके लिए वो चीज समझना टफ था. एंड दैट इज विद ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हाउस होल्ड राइट नाउ. सो कोई भी बच्चा अगर कल जाके बोलता है मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ करना है, पेरेंट्स विल क्वेश्चन, रिलेटिव्स विल क्वेश्चन, आप खुद क्वेश्चन करोगे कि कुछ हो पाएगा कि नहीं. सो जस्ट नो कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है. इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, इफ यू वांट टू बी अ पायनियर इन दिस इंडस्ट्री, यू कैन बी. ठीक है. बस जस्ट नो योर पर्पस. डोंट ट्राई कि मैं आज से ही स्टार्ट करके मेक माई ट्रिप से compete करने लगूंगा, या मैं किसी थॉमस कुक से compete करने लगूंगा. दैट इज नॉट समवेयर हाउ यू विल सक्सीड. ठीक है. यू विल नीड टू हैव योर नीश, तुम्हारा एक अलग चीज जो तुम्हें डिफाइन करे. एंड जो एक चीज मैंने बोली थी पर्पस, उसके साथ साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक नीश. तो आपको क्या चीज अलग करती है. राइट नाउ 40 people on this call, there are billions of people in this country.
हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है. As surprising as mind blowing that fact is, Tanisha right now is different from Sakshi. She will have something different from Sakshi, and that is what the beauty of humans are is, right? Like कि हम सब बहुत कुछ similar feel करते हैं. बहुत चीजें हमारे इमोशंस एक्सपीरियंसेस कहानियां हम सबकी सिमिलर हैं, बट एज अ पर्सन इफ आई टेल यू टू डिफाइन योरसेल्फ, no two people in this world will define themselves in the same way. So that is the beauty, that is what a niche is called, कि जो चीज आपको डिफाइन करे. तो वो चीज हमेशा याद रखना इन लाइफ ऑल्सो, कि कौन सी वो चीज है जो आपको डिफाइन करती है. व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू. समथिंग दैट वी डू ऑन आवर ट्रिप्स ऑल्सो, दैट वी have these communications conversations with people which makes people retrospect. तो कभी अपने आप से भी पूछना कि वो ऐसी क्या चीज है लाइफ में जो तुम्हें डिफाइन करती है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, कौन सी एक चीज है लाइफ में जो तुम्हें इंप्रूव करनी है. वीकनेस हटाओ. One thing that you want to improve on in life, one thing that you want to change about your life, something that you want to develop on in your life. These questions are something that you should keep asking yourself, because that is what your life revolves around. So always focus on that. तो नीश एंड पर्पस, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स स्टार्टिंग एनीथिंग ऑफ योर ओन और योर कंपनी. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे अगर किसी को अपना कंटेंट क्रिएशन करना है, ब्रांड बनाना है, फिर अ ट्रैवलर और ट्रैवल कंपनी, इंस्टाग्राम इज योर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म. Instagram and your website, these two things are where the entire marketing business runs on a travel company. And that helped in our case, my Instagram, Firgun ka Instagram, that helped us getting to people. And that is what you have to focus on. But the most important thing is you have to stay patient. आप अपनी ऐसा मत करना, ट्रैवल कंपनी कल खोली, आपको एक महीने में फॉलोअर्स नहीं मिले, आपने पैसे दिए, रातों रात आपके 1000 से 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज जब तुम कल को कोई पोस्ट या रील डालोगे, तुम्हारी रीच फिर भी वो 200 तक ही रहेगी जो तुम्हारे फॉलोअर्स थे. बाकी सब बॉट्स है वहां पे. Now, how to succeed as an Instagram content creator, how to succeed as an influencer, if that is something on your mind. There is an Instagram algorithm that is followed. Instagram एक कंप्यूटर बेस्ड ऐप है, AI है. इस पे कोई इंसान बैठ के पीछे से नहीं चलाता है कि कौन सी रील वायरल करनी है, कौन सी नहीं करनी. दे फॉलो अ सेट मेथड एंड आपको मेथड क्रैक करना है. दैट इज ऑल. आपके अगर 200 फॉलोअर्स भी हैं अभी इंस्टाग्राम पे, एंड दोज आर जेन्युइन फ्रेंड्स, जेन्युइन फॉलोअर्स, इफ यू पोस्ट अ रील टुडे, how does a reel get viral? Does anyone over here have an idea? आप unmute करके बोल सकते हो if someone knows. How does a reel or a post get viral? शेयरिंग, जितना ज्यादा उसको शेयर करो. Okay, that is one thing. With the So- hashtag. By getting more saves. Correct. Engagement. So there are two basic methods on how a reel gets viral. A, the number of shares it has, the number of people it has been shared to. आप अपनी reel की insight देखोगे, उसमें आता है the number of shares and the number of saves. So Instagram follows this basic algorithm that your content is worthy or important that so many people have saved it. अगर 200, 250, 300 लोगों ने save किया, that reel keeps getting pushed आगे and आगे. अगर 100 लोगों ने share कर दिया वो इधर से उधर, that reel keeps getting pushed. तो अगर आपके 200, 500 भी followers हैं, अगर आप उनको, आपको starting में beg borrow steal करना पड़ेगा. You will have to tell them कि यार इसको save करो, इसको share करो. 100 people share your reel, it will reach at least 50 more people, and if they like the content, that will reach 100 more people. That is how my reels got viral. That is how my Instagram got viral. That the number of people who saved all of this, the number of people who shared all of this was a lot, and the amount of engagement you have on your post. अगर कोई भी reel आपने post करी, there are specific times and everything. All of that I think is a separate topic. We can have that some other day, or you can message me on Instagram. I can explain you कि किस time पे post करना चाहिए travel reel, किस time पे आपका audience most active होता है. Because the initial amount of traction that a reel gets is what defines everything. अगर आपने बहुत अच्छा content डाला, पहले 2 घंटे में उस पे काफी engagement आ गया, that keeps getting pushed. अगर 10 दिन बाद आ रहा है, there is no point, वो नहीं push करेगा Instagram. Instagram का algorithm is very fucked up. तो you will have to post good content. That is your priority to begin with. You can post crappy content only when you have millions of followers. उससे पहले तक there is no point of posting crappy content. उसका कुछ नहीं होगा. Post good content, post content from a set devices. ये सब चीजें again deviating from the topic. If someone wants to know, feel free to DM me कि किस type के devices use करने चाहिए, किस type का content use करना चाहिए, किस format में shoot करना चाहिए. I can tell you all of that. तो अगर किसी के दिमाग में भी वो question है, feel free to message me on Instagram. I will tell you all of that. Now, other possible careers in the travel industry, something I wanted to talk about. कि अगर आपको सिर्फ ट्रैवल कंपनी ही स्टार्ट करना आपका मेन एम नहीं है, देन व्हाट एल्स यू कैन डू. फॉर स्टार्टर्स, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ट्रिप लीडर. जैसा मैंने कहा, देयर आर 900 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड.
not every company is the most famous, but every company will need a trip leader if they're organizing a group trip. अगर आप महीने में, if you're doing at least 3 trips for a company, now it will vary from company to company. Like our company, what a trip leader will get paid will be very different from a company which is established since a long time. And the fun part over here is that companies which are established since a long time will pay you lesser than companies which are new, companies which are starting out and which are startups right now. And जिस company का purpose आप जानते हो, आप समझते हो, जिसके साथ आप relate करते हो, I would suggest working with that only, because companies which are doing it on a weekly basis, expeditions भेज रहे हैं, that will pay you very less. They will give you a free trip for sure. They will make your trip free. आपको 5,000 10,000 पे कर देंगे for a weekend trip. आप 3 दिन में उतना कमा सकते हो. आपको daily allowance मिल जाएगा. So you're not spending anything, but you are getting that much out of it. कि you're getting your experience, you're getting a portfolio of 20 more people in your list जिनको आपने trip lead किया, and you're traveling for free. If that is your aim to start with, well and good. And starting में तो I don't think उतना सोचना भी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. Starting में वो experience build करते रहो, because once you take that first step towards one trip, आपको 1000 चीजें नई खुलती मिलेंगी, 1000 connections ऐसे बनेंगे कि आपको कोई इंसान यहाँ से उठा के वहां रख सकता है. दैट इज हाउ कनेक्शंस बिल्ड अप. अगर नेपोटिज्म जैसी चीज बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती है तो उसका बेस अराउंड यही है कि आप वो कनेक्शंस डेवलप करो, आपको कोई हेल्प करेगा, एंड वो हेल्प तभी होगा व्हेन यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. घर बैठे बैठे वो चीज नहीं होगा. तो जस्ट वेंचर आउट इनटू व्हाटएवर इट इज. सो ट्रिप लीडिंग का मैं बता रहा था. These fixed companies, since I have worked with a company, Capture a Trip, जो कि बहुत established company है, and I led one trip for them, my first trip with them, and the amount of money they offered was, I think कोई internship भी कर लेगा 1 महीने तो शायद उससे ज़्यादा कमा लेगा. So that is what these companies do, which are very established. Now, then I worked for another company which was in this industry for 8 years, and they focus on human bonds and all of this. They focused on all of this, and वहाँ पे trip leader के efforts बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं. So they paid me 5 times of what this established company was paying. Now, when we are starting out, Firgon Travels, we've done around 8 months of trips. Now, what we will pay to our trip leader, we know कि हमारा purpose क्या है. Our purpose and niche is कि एक trip leader will be responsible for building those connections, making people open up on trips. So effort as a trip leader is what the maximum thing that we should focus on is in our company. That's our purpose. So what we will pay to a trip leader will be way more than what other companies will pay. कल को कोई स्टार्टअप आएगा जिसमें आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है wherein you will have to put in that much effort, you will get paid for that, and you should get paid for that. तो ट्रिप लीडिंग इज वन ऑप्शन. अगर आप महीने में 3 ट्रिप्स भी लीड कर रहे हैं, you will gain approximately 50-60K free travel for the entire month. अगर कोई लंबी ट्रिप है, आपकी फ्लाइट्स भी कंपनी कराती है, आपको डेली अलाउंसेस मिलते हैं, आपके होटल स्टे सब कुछ है. And if you want to build your Instagram side by side, this is the best thing possible, because you're traveling for free, you're getting paid for it, your portfolio is being built up, and you're meeting so many new people. And आप जितनी ज़्यादा trips lead करोगे, better companies will hire you, they will pay you more, because your experience matters a lot in this industry. So when you're starting out, don't think यार overnight you will start earning in lakhs, crores. तुम रातों रात एक influencer बन जाओगे, तुम्हें सब कुछ free में मिलेगा. That is not how it works. And the other options that you have is firstly an Instagram content creator. Again, you don't need to have 20-30,000 followers also. अगर आपके 10,000 भी genuine followers हैं and your reach on reels is 20-30K views on every reel, you will have brands reaching out to you for paid collaborations, for barter collaboration. ये सब चीजें आपको बहुत आसानी से मिलेंगी. And you just have to stay patient. आपको content post करते रहना. You just never know what gets viral. ठीक है. Other options that you have is like an operations head in any travel company. And you can be an operations person, a full-time person, an intern, or an operations head. Now the role of an operations head basically is कि आपको उस कंपनी के सारे bookings manage करने हैं. You will have to manage, एक कोई ट्रिप प्लान हो रही है अगर, तो उसकी जितने भी होटल बुकिंग्स हैं, ट्रैवलर बुकिंग्स हैं, वेंडर कनेक्शंस हैं, आपके जो भी ट्रिपर्स का डेटाबेस है, दैट यू विल हैव टू मेंटेन. नई ट्रिप्स का रिसर्च करना है, न्यू आइडियाज दैट यू हैव, आइडिएशन, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. An operations person is who runs a company. It's not the CEO, it's not the marketing person, it's not the trip leader. An operations person is the biggest backbone of a company in the travel industry. If that is something that interests you, I would suggest get into that, because that will teach you everything possible about a travel company. Everything possible. Next option that you have, again, the pay will vary company to company. अगर आपको किसी company का specifically जानना है, the ones I know, I'll DM you. Again, I will not use this platform to reveal pays कितने होते हैं companies के, but ठीक है, feel free to DM. I will put my Instagram and वो सब अभी नीचे. ठीक है, anyway, that will do. So apart from that, what you can do in this industry, if you're a writer, if you're a photographer, you have again amazing options. You can be a travel photographer. आप बहुत सारी magazines, companies के लिए photography कर सकते हो. You can create content for them, other people.
All you have to do is pick up your camera and learn from YouTube 1 महीना. That is all that you need to become a photographer. I'm telling you. आप उतना बेसिक सीख लो, उसके बाद hands on practice करते करते you will develop so much art and this so much talent that nobody will be able to stop you. And again, as I said, competition is not enough. You can be someone who stands out in this industry. It's not an IIT. It's not an IIT जहाँ पे लोग apply कर रहे हैं लाखों लोग. That is not how it works because it's not a stable career. So people will obviously be scared for it. You can be a photographer, you can be a videographer, you can be a travel writer. When I started out, I used to write a lot. I used to write articles, I used to write poetries. तो जब मैं start करता था मुझे लगा था मैं writing में किसी तरह घुस जाऊंगा. I will keep earning some money from this and then eventually run my career portfolio बना के. But one thing I realized, and one thing which is a harsh reality also, that if you're a travel writer, you will probably not get paid enough unless you're working for a very big magazine. So if money is not your biggest aim right now, feel free to do it to develop your portfolio. But if money is your biggest aim, writing का importance I think आजकल थोड़ा कम हो गया, as sad as it sounds, because people don't read उतना जितना people watch. The reels and Instagram and videos, YouTube पे जितने vlogs हैं, that works way more than articles and blogs right now. It's the harsh reality, it's the hard truth, and that is what I want to tell you right now. You can be a vlogger. Again, this is a sector which, if you're someone who's good in front of camera, if you're someone who can talk and show places in a very beautiful manner, YouTube is your industry. YouTube can give you a lot of money. And viral होने के लिए एक video लगता है. Again, everything links back to your purpose, your niche. How can you be different from any other vlogger out there? आप ऐसा क्या fun दिखा सकते हो, ऐसा क्या poetic दिखा सकते हो अपनी reels में, अपने videos में कि you stand out when compared to everyone else. And I think knowing that and valuing that matters the most. And it's very easy. आपको एक phone ही तो चाहिए. All you need is a phone, a tripod, maybe a stable internet connection and videos upload करने. But that initial plunge जो होता है ना, जो एक डर रहता है कि यार कुछ हो पाएगा इस इंडस्ट्री में कि नहीं, वो सब हमारे दिमाग में बहुत चलता रहता है. We are constantly thinking कि यार this is a very unstable industry. Will I be able to succeed? Will I be a failure? Will I not earn anything tomorrow? Yeah, at least give 1 or 2 years. Fail if you want to. It's okay to fail because that will teach you so much, so much. You will know what not to do. You will know how to do things better. And yeah, almost every startup fails in the beginning. Every big CEO out there, every big company has failed in the beginning. So right now, if you're thinking कि यार मैं एक चीज try करूंगा and that will be 100% success, that is not how life works. अगर आपको उस चीज में आज भी सक्सेस मिल गई, आप कल उस चीज में फेल हो सकते हो. तो just let yourself know. I mean, I understand. Hi, really sorry. So yeah, that's what I was telling you कि यार, if you're right now scared to fail, that means you're scared to try. तुम एक चीज ट्राई करो, अपनी स्टोरी बिल्ड करो. दैट इज योर स्टोरी, राइट? तुम आज निकल रहे हो, कुछ अचीव करना है तुम्हें लाइफ में. The purpose of your life should be to build a story worth talking about. That story can involve failures. That story can involve कि तुम यार बहुत कुछ ट्राई किया तुमने बट नहीं अचीव हुआ. But as long as you tried, I think that is your story. That is the purpose. That is everything behind your life, I think. कि आपने एक बार वो ट्राई किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है. एटलीस्ट यू विल नॉट हैव दैट रिग्रेट कि मैंने ट्राई नहीं किया. सो देन वेरी स्मॉल स्टोरी एंड आई थिंक थोड़ी रेलिवेंट है इस चीज में बिकॉज ऑल ऑफ यू आर स्टार्टिंग आउट. When I decided to quit my job, I told my manager that I want to quit and pursue something in travel industry. And I was decently good at my job, so he tried to convince me कि यार रुक जाओ यहाँ पे, there is a lot of option. And he gave me this option कि यार you travel on weekends, you try and figure out if this is something that you want to do in life or not. And you do it with work कि तुम 4-5 दिन करो, I will give you less work, तुम weekends पे travel करो, तुम समझो ये चीज कि तुम्हारे लिए है कि नहीं. Now, obviously, it may sound very exciting and safe to someone कि यार I'm getting to keep my job, I'm getting paid 1 lakh a month, and then I'm also getting to explore something else. कि यार मैं इस चीज में अच्छा हूँ कि नहीं. But in that meeting, वो meeting 2 से 3 घंटा चली, and during the last half an hour of that meeting, suddenly a thought struck me कि यार अगर मैं इस चीज में अगर काम के साथ करूंगा, which means I'm giving what 70-80% of my abilities to this, my efficiency to this dream purpose of mine जो भी मेरे दिमाग में है. And 70-80% दे के अगर मैं फेल हो गया, will I ever be able to justify this failure to myself? Or will I always question कि यार मैंने अपना 100% तो दिया ही नहीं, क्या पता मैं तब सक्सीड कर जाता अगर मैं 100% देता. अपना 100% दे के अगर मैं फेल कर रहा हूँ,
तो एटलीस्ट उसके बाद मेरे अंदर ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी. आई ट्राइड, आई फेल, दैट्स ओके, आई विल डू समथिंग एल्स टुमारो. बट आई थिंक वो एक जो करेज लाना होता है ना, दैट विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट इन योर माइंड. One thing that will stop you probably from having this attitude is financial responsibilities towards your family. Now that becomes very important. I totally understand that. I'm not telling you कि सब कुछ भूल जाओ. Just tell the world to like जाए भाड़ में, मैं नहीं जानता, मैं अपना चीज करूंगा जो मुझे करना है. That is not how life works. That is not how human relations work. So that is one thing you will have to work around. If that is your thing कि अगर financial responsibilities बहुत ज्यादा हैं, if your parents are dependent on you, your family is dependent on you, then always give it a try. Learn something while working with someone else or for someone else. Build that portfolio and become that confident one day कि हाँ मैं ये चीज छोड़ के अपना start कर सकता हूँ. I will not tell you कि तुम directly कुएं में कूद जाओ if swimming तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है. You will need to know basic swimming to jump into any ocean of possibilities. And as long as तुम्हें वो basic swimming आती है तब तुम कूद सकते हो इस चीज में. But अगर नहीं आती है, take your time. लाइफ इज नॉट तमाशा, लाइफ इज नॉट ये जवानी है दीवानी की ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाएं. तुमने डिसाइड किया एंड चीजें हमेशा सक्सेसफुल हो जाएं. चीजें अनसक्सेसफुल होंगी, तुम फेल होगे. एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू फेल, इट्स ओके. बट इफ यू कांट अफोर्ड टू फेल, देन यू विल हैव टू टेक दोस कॉशियस एफर्ट्स कि तुम थोड़ा फूक फूक के कदम रखोगे and तुम्हें कहाँ पहुंचना है वो चीज तुम हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो. नाउ अगर किसी को वो भी क्वेश्चंस है ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, आई विल टेक दैट अप. बट वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू राइट नाउ इज that there have been 3 weapons that I have kept with myself when it comes to starting my own thing या कुछ भी अपना करना, stable job छोड़ना. And these things बहुत Bollywood sound करने वाला है अभी. You guys might even laugh कि ये सब क्या सुन रहे हैं. But these 3 things matter a lot in life. Firstly, it's not going to be easy because it's not supposed to be easy. When you start something of your own, when I started something of my own, I had drilled this thought in my head कि यार ये आसान नहीं होने वाला है. तो उसके बाद जब मैंने डिफिकल्टीज फेस करी, आई वाज नेवर शॉक्ड और सरप्राइज्ड. आई वाज ओके कि हाँ यार ये तो आना ही था ना. जब मैंने सोचा था अपना खुद का स्टार्ट करना, आई वाज रेडी कि आई विल फॉल, आई विल फेल. मेरे पास एक दिन पैसे कम होंगे, मैं एक दिन कम खाऊंगा कहीं, मेरी लग्जरीज रिड्यूस हो जाएंगी. पहले जब मैं 10,000 के जूते खरीद सकता था, अब मैं एक जूते में पूरा साल निकाल सकता हूँ. वो चीजें मैं चेंज करूंगा. वो चीजें मैं खुद को बताऊंगा कि हाँ यार आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम रेडी टू पे दिस सैक्रिफाइस, आई एम रेडी टू लाइक गिव इट ऑल फॉर दिस. एंड जो भी चीजें हैं, अगर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे ना, तो chaos, mess, all of this will not sound funny in life. You will be prepared for chaos, you will enjoy the chaos यार कि हाँ आज मैंने 2 रोटी कम खाई, मैं शायद थोड़ा भूखा सो गया, बट मेरा सपना अभी भी अलाइव है. एंड जब वो जुनून आपके अंदर आ जाएगा ना, यू विल डेफिनेटली वांट टू डू इट एवरी नाइट. एंड इवेंचुअली आप उस लेवल पे पहुंचोगे जहां आपका जो मन है आप कर सकते हो. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग दैट यू नीड टू हैव इज उम्मीद. उम्मीद, as simple a word as it sounds, जब तक आपके अंदर वो एक होप नहीं है कि चीजें सही होंगी, that whatever you are doing, whatever effort you are putting will lead to something positive, सब कुछ फेल है. अगर आप यही सोच के कर रहे हो, आज हर एफर्ट डाल रहे हो कि हाँ कल मैं फेल ही होऊंगा, बस मैं एफर्ट डाल देता हूँ, आज देखा जाएगा, तो आप नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है. ठीक है, आप वहां पहुंच भी जाओगे, आप शॉक्ड हो कि यार ये नहीं है मेरे लिए, मुझे शायद इससे ज्यादा कुछ बेटर अचीव करना था. तो एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक वो पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करती है लाइफ में. क्योंकि आई मीन जेन्युइनली अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो आज, अगर आप यही पेसिमिस्टिक अप्रोच से करोगे कि टुमारो दिस विल नॉट वर्क आउट, देन इट विल नॉट वर्क आउट. आई गारंटी यू दैट इट विल नॉट वर्क आउट. बट इफ यू आर पुटिंग इन एवरी एफर्ट टुडे, आप अकेले ही कर रहे हो, बट इन योर हेड यू हैव दैट थॉट कि हाँ दिस विल समडे लीड टू समथिंग, आप वो खुशी खुशी एफर्ट डालोगे. एंड दैट इज वेरी मच नीडेड. Last thing that you need to have is self belief, because this world will not believe in you. And I'm not telling that trying to sound very negative कि लोग बहुत बुरे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं. People will support you, people will lift you and put you on a pedestal, people will do everything possible for you. But जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करोगे हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, जब तक आप खुद कन्विंस नहीं हो, till you don't have that self belief, no one else will believe in you. The first person that needs to believe in your dreams and yourself is you, and as long as that happens, everyone else will believe in you. When I told my dad I want to quit my job, initially when he laughed and when he said कि travel industry में कुछ हो सकता है कि नहीं, it took me a month to convince him that I am going to quit my job. Why? Because for those 29 days initially मैं खुद convinced नहीं था कि ये मुझे करना है. 30th day पे I was convinced. I told myself this is what I want to do and there is no alternative. This is what I want to do for sure. And that is the day my dad agreed to it at once, because he heard that thing in my voice ki haan this is what he wants to do and nothing can stop him now. So do that.
And since you're all freshers, this will probably be your first job after college, जो भी आप achieve करना चाहते हो. I would genuinely suggest start with some company, work for them, work with them, try and learn as much as possible hands-on experience, be it only 6 months. आप 6 months दे दो उस चीज को, and वो चीजें सीख जाओ. उसके बाद खुद का कुछ start करो. Don't just directly jump into it. It's not going to always be easy unless you have that support backing. आपके पास कोई funding ready है. It's not going to be easy. So just try and understand that sector. आपको Instagram का कुछ भी समझना है, the intricacies of anything, feel free to DM me. I will chat box में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे जैसे ही मिलेगा, I will type in my Instagram name. But yeah, Sakshi, if you can help me with that, if you can just Yeah, I have already sent your Insta ID on our group. perfect. So yeah, whoever wants to reach out, feel free, and we can discuss this at length. And if you have any questions, feel free to shoot Abhi. Okay, in call messages is what it is. Now I can read everything. Okay, I have a question. Abhi you said you should start traveling. सबसे पहले तो that is the first thing you need to do. So basically, as a girl, मतलब if we ask parents for a solo trip, तो they would not allow us. ऐसी problems तो होती हैं because of obvious reasons, safety issues. फिर इतना कुछ हो रहा है. तो like, how should we start traveling? So this So- is where this is a great question and question that comes up very often, and this is where you start playing safe. So जब आप किसी ट्रिप पे जाते हो as a female solo traveler in India, it's going to be difficult because of whatever the situation has been in India. ठीक है, I understand the concern, I understand why parents are saying whatever they're saying, but I think as a female traveler, because my co-founder is also a female, and when she was trying to convince her parents that this is something that she wants to do, बहुत revolt हुआ, अभी तक होता है. But one thing which is very important right now is if you're going on a solo trip, एकदम अकेले travel कर रहे हो and parents agree नहीं कर रहे, shift to the group trip mechanism. बहुत सी companies हैं which take groups in what 15-20 लोगों का group होता है. Our travel company on a trip 20 people अगर आ रहे हैं, there are 14 or 12 girls traveling solo. There are 5 to 6 boys because boys के लिए easy होता है life में अपने दोस्तों के साथ निकल जाओ कभी भी. These group trips are opportunities for you to travel in a very safe manner because you're traveling in a group. Firstly, you're not traveling alone. You can provide the contact details of whoever is leading that trip or 4-5 people from that trip, and you can show their trips to your parents. अपने parents को उनकी सारी trips अभी तक की दिखा सकते हो, उनके reviews दिखा सकते हो, how it is safe for people. And all of this you will have to keep your parents informed at all times as to where you are. And once वो 2-3 trips हो गई ना, या एक trip हो गई successful and they see you happy, they will allow you. But वो initial traction will require a lot of convincing. You will have I will genuinely suggest कोई भी travel company के साथ जाओ which is convenient, which fits your budget. Go with them, and before convincing your parents, show that travel page to them. Show कि इस company की trips कैसी होती हैं. पूरी itinerary उनको दिखाओ. तुम बताओ तुम कहाँ रहने वाले हो, कहाँ पे तुम्हारे पास network होगा, नहीं होगा. And just पीछे पड़ जाओ यार उनके. Don't just listen. अगर किसी ने भी एक बार में मना किया, तुम 10 बार और बोलो. वो eventually वो गुस्सा and वो concern थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, and they start listening to you. And once you start listening is when you hit that nail कि हाँ मुझे convince करना है. Show them every review that has come from that company. कोई भी company के साथ आप travel कर रहे हो, आप उनकी reels दिखाओ, उनकी trips कैसी होती हैं ये दिखाओ, and उनको बताओ कि इनके साथ majorly solo female travelers travel करते हैं. आपको किसी कंपनी के ओनर या किसी से ट्रिप लीडर से बात करवानी है, आप वो करवाओ. And that is how they will get convinced. There is no other way to convince them. All right. Hi, I have a question. Like, from where did you get the idea of like getting yourself into this industry? So when I was working for the corporate sector, even during COVID, I used to travel a lot. I used to love being around people, and that is something that stuck with me. कि यार, I am turning 25 now, and this is probably the peak age, right? 20s जो आपका होता है पूरा to do things in life, maximum energy, maximum motivation. And I didn't want to be defined by whatever I was doing because I was like बहुत stable हो रही है life, बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे रुका हूँ, एक ही portfolio चल रहा है मेरा. And more than portfolio, my experiences are similar. कि what I'm doing on Monday, I'm doing a control C on that. Friday तक उसको control V कर दे रहा हूँ मैं. Copy paste चल रहा है.
एंड 2 दिन में तुम कितना कर सकते हो? तुम 2 दिन की जिंदगी के लिए तो नहीं जीते हो ना एक हफ्ते में. So that I tried to convince myself. It took a lot of time. It took, I think, 8 to 9 months of convincing myself that I want to quit my job. And then when COVID came, I think that was the trigger point for me. Ki yaar, life is very unpredictable right now. Anyone can die at any point of time. Anything can happen tomorrow. Anything can strike you. So many earthquakes happening today. Yaar, you will realize this. 50, 60,000 people died in Turkey. There are earthquakes happening in India. And again, not trying to sound Bollywood, but genuinely, life is so unpredictable that you just don't know what happens tomorrow. So all you have is today for yourself. And if I think when I entered the travel industry, I didn't know कि यही सब कुछ है. I just wanted to try something new. Personally, also there were things going on which I wanted to get rid of, and everything just came कि हाँ, I want to heal myself. And I think as a trip leader, you start healing other people, and that helps you a lot. So that became my purpose. कि as a trip leader, I want to travel with people, give people that experience, and that really helped me. So वो trigger मेरे लिए शायद COVID था, realizing कि I don't have a lot of time to pursue whatever I want to do, and I wanted to try new things. So tomorrow again, so travel is not something that is going to stay permanent, is what I want to believe in. Tomorrow if something else interests me, something I feel कि हाँ मे बी मैं यहाँ पे ज्यादा खुश हो पाऊंगा या वो ज्यादा खुश कर पाऊंगा लोगों को, I will switch to that. Because what if I'm better at that? What if I enjoy that more than this? And I will find out only once I try, right? Like मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता है, बट टुमारो इफ आई डिसाइड कि हाँ मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो मे बी आई विल स्टार्ट एंजॉइंग इट. मे बी दैट इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू परस्यू. सो अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू फाइंड आउट कि तुम्हारा क्या पर्पस है, तुम्हारा क्या zen है, there is no, I mean तभी पता चलेगा तुम्हें जब तुम ट्राई करोगे. So just try. And 20s are for this. Yeah, 20s are for making mistakes, 20s are for failures, 20s are for ups and downs. And just give yourself that energy or that confidence कि यार it's okay if I fail. Like हमेशा लाइफ में कोई भी टास्क करो ना, just ask yourself what is it that I have to lose. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज तुम्हारे सामने हो, just ask yourself what is the maximum I can lose from this. And once you have an answer to that, I think you will never give up. You will go for it. Anyone, there any is question? one, Go. yeah, Yeah. there is one more problem that we face usually. Like आपने ही अभी बोला that travel industry is not a stable industry. कभी भी कुछ भी हो सकता है. So like even our parents are really concerned about us कि मतलब इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं है, and what will you do अगर फिर से कोविड जैसा कुछ सिचुएशन आता है तो, and वही same thing. So these are situations and questions जिसमें आप success stories काम आती हैं. And there are companies working since a long time. There are companies who stopped functioning during COVID but are up again. And I think COVID जैसी चीज might have stopped the travel industry, but once COVID went away, the biggest industry that gained from it was tourism. No matter where you go today, you will find places flourished with people today, because after COVID, people have realized the importance of travel. Yeah. And this is exactly where success stories come in. आप success stories दिखाओ लोगों को, आप अपने parents को दिखाओ, travelers की दिखाओ, travel influencers की दिखाओ कि from where they have reached और कहाँ पहुँच गए हैं, travel companies कहाँ से start हुई हैं, आज कहाँ पहुँच गई. And once you enter this industry, obviously one thing that you will have to focus on, that कि तुम एक चीज पे rigid ना रहो कि this is the kind of trips I do, मैं यही करता रहूंगा, because what if that is stopped by some force. So you will have to think of ways. And once you start fighting, no, अगर आपके अंदर एक वो attitude आ गया कि नई कंपनी स्टार्ट करनी है, on a day that वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, you will figure something else out also. Because आपने उतनी हिम्मत कर ली कि आपने कंपनी स्टार्ट कर ली, कंपनी बिल्ड कर ली, and tomorrow if COVID comes, your brain will automatically work, your connects by then will work, the money that you've made, saved will all work, and you will diversify. अगर आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, आप रुकोगे, ठीक है, आप सोचोगे और चीजें कि आप क्या कर सकते हो. And that is the definition of an entrepreneur, right? You face problems, you solve problems. The whole purpose of business and startups is that, right? तो अगर आपको अपना startup करना है, that problem solving skill will automatically come, and no matter what the problem in front of you, you will solve it. Also, guys, as I mentioned, you can reach out to me. अगर मेरा number भी share हुआ, you can reach out to me on WhatsApp on any time. You can reach out on Instagram at any time. And आपके दिमाग में भी कुछ ideas हैं, if there's a business idea that you need help with, I'm happy to help. Don't worry, I will not steal your idea. So if there's anything that you need help with, feel free.
and we can discuss that. We can see how we can work it out. And if there is any opportunity that we can give you as a travel company also, I think we will try and provide that, since all of you are starting out. And would love to help यार, because I have seen कि जब मैं इस industry में आया था, there was nobody to guide me. Everything I tried and figured out on my own. I traveled for a lot of time. मैं solo travel किया, मैंने buses, trains, as local transport as possible, hostels, and volunteer work जब करता था mattresses पे सोते थे. And because I've learned it from scratch, so I know what can go right, what can go wrong. Every single thing that you will feel as a person जब आप नया कुछ start करोगे, every ups and downs, I have gone through it. So I think if there's any need for any one of you कि किसी से बात करनी है, कभी कुछ help चाहिए, feel free to reach out, and I would love to help. Yeah, I have a question. So myself, Akhilesh, I have a question that how to travel in the college days, because we have enough time, less time, and how to travel in college days. So And budget also. क्योंकि मतलब अगर मैं कुछ कंपनीज में भी देखा था कि अगर काम करना हो तो अगर एज अ इंटर्न तो इट टेक्स 3 to 2 months. वो कहते हैं कि 3 to 2 months आपको हमें देना पड़ेगा, तो हम ऐसे नहीं दे सकते ना कि 3 to 2 months तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कैसे ट्रैवल करें? I think so. दोनों questions थोड़े different हैं. Let's tackle them differently. First question that you said कि travel कैसे करें being in college, because I'm assuming आपका 5 day working होगा college, Monday to Friday. Yeah. ठीक है, and you are in Delhi. Now the biggest advantage of being in Delhi is कि सब कुछ overnight journey है. सारी places जो उत्तराखंड, पूरा हिमाचल, ये सब जगह हैं, it's all overnight, and एक एक state में हजारों जगह हैं घूमने के लिए for you. Now the biggest obstacle in front of you right now would be money, because you're a college student. You cannot just spend, you cannot take flights overnight, ये सब. अगर आपको genuinely travel करना है, थोड़ा research work लगेगा इस चीज में, but for example, as close a place as ऋषिकेश के लिए, see again, अगर आप कितना sacrifice करने को ready हो, उस पर depend करता है ये चीज. If you can take a local bus to ऋषिकेश, if you can take a train to ऋषिकेश, आप 100-200 रुपए में पहुंच सकते हो ऋषिकेश. If you plan everything, you reach there in 200-300 rupees. You stay in a hostel which will cost you 400 per day. आपने मील्स खा लिए वहां पे 200-300 रुपए में आराम से मिल जाते हैं मील्स फॉर द डे. तो आपका पर डे, आपका यहाँ से जाना आना मान लो अपर लिमिट भी ले लिया, 500 लग गया ऋषिकेश जाने में. वहां पे 2 दिन आपका वीकेंड है. यू गो देयर, यू एक्सप्लोर, टॉक टू पीपल, मीट लोकल पीपल. आपका सब कुछ मिला के आप 2-3 हजार में जाके वापस आके सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड दिस इज ऑल्सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम बसेस, ट्रेन, ये सब लोकल, स्लीपर क्लास, सब कुछ. तो आई एम टेलिंग यू बहुत सस्ता है इंडिया में ट्रैवल करना. इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव दैट विल कि हाँ, अगर मुझे इस टाइम पे लग्जरी फूड नहीं मिल रहा है, मुझे इस टाइम पे सब कुछ नहीं मिल रहा है, I'm okay with that, बिकॉज मेरा मेन पर्पस राइट नाउ इज ट्रैवल. आप 5 दिन मेस में खा रहे हो, डीयू में आप खाओ, वहां पे भरपेट खा लो, आप बेसिक चीजें अपने साथ ले जाओ, एंड उस वीकेंड थोड़ा कम स्पेंड कर लो, आप कम लग्जरी में रह लो. आप ट्रेन से जाओ, आप हॉस्टल में रहो. हॉस्टल से ऊपर तो आई वुड नेवर सजेस्ट, होटल रूम्स लेने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज एज अ ट्रैवलर हॉस्टल्स में जो वाइब होती है, जो लोग आपको मिलते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. These are things you can do, and if you're traveling in a group, I think आप ट्रिपल शेयरिंग पे भी कोई रूम ले लो, आपको हॉस्टल के प्राइस पे मिलेगा. एंड हर जगह इंडिया में इतने होटल्स हैं, इन सारी ट्रैवल टूरिस्ट जगह हैं, इन पे इतने होटल्स एग्जिस्ट करते हैं कि आपको 500 रुपए पर डे से लेके 50,000 पर डे का रूम चलता है. तो इफ यू आर ओके कि आपको ट्रैवल करना है दिन भर, आपको बस लगेज रखना है आपका, देन यू कैन स्टे एट एनी प्लेस. And these experiences is what will build you. These experiences is what will transform you as a traveler. And slowly, once you graduate, once you start earning, आपका obviously standards बढ़ता जाएगा of living, and then you can eventually make that switch. But right now, weekends is a great option for you to start traveling. आप एक दिन off ले लो, Mondays off आ जाएंगे, long weekends हैं, Fridays off आ जाएंगे. थोड़ी planning लगती है इस चीज में. I will definitely tell कि थोड़ा plan करके जाओ, कहाँ रुकना है, क्या क्या देखना है, ये सब हल्का सा अपने दिमाग में रखो, एंड बाकी ऑन द गो चीजें करो. बट वीकेंड्स का यूटिलाइजेशन करो. टेक मंडेज ऑफ, टेक फ्राइडेज ऑफ इफ यू कैन. पोस्ट वर्क, पोस्ट कॉलेज ऑन फ्राइडे आप निकल गए, सैटरडे संडे एक्सप्लोर किया, संडे रात को वहां से निकल गए, मंडे मॉर्निंग बैक टू कॉलेज. एंड देन दीज आर थिंग्स हाउ यू कैन वर्क इट आउट इजिली यार. एंड इन कॉलेज आई ऑल्सो यूज्ड टू ट्रैवल, बट हम अगेन पैसे उतने नहीं मिलते थे हमें तब. 4-5 हजार मिलते थे महीने का, जिसमें हमें निकालना होता था. एंड उसमें हम किस तरह से सेव करके, किस तरह से लोकल बसेस लेके इधर उधर घूमते थे. राइट नाउ अगर आप ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे हो, से दैट इज नॉट समथिंग यू कैन प्रायोरिटाइज. आप अपना स्किल सेट डेवलप करो.
आप इंटर्नशिप्स जो अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, नो कंपनी विल आस्क यू टू वर्क मोर देन 4-5 hours राइट नाउ, एंड इफ योर कॉलेज गेट्स ओवर एट 12-1, जो भी आपके टाइमिंग्स, आई डोंट नो योर टाइमिंग्स, बट if you can give that timing, that is again your portfolio build up and learning so much about this industry. You guys are probably what, 20 right now, approximate age 20-21. इस एज पे if you are 19, thinking, 20. yeah, so 19 से स्टार्ट होगा आपका कॉलेज, एंड देन इस एज पे डोंट थिंक कि यार यू हैव टू ट्रैवल 20-29 स्टेट्स जो इंडिया में है, आप सब ट्रैवल कर लोगे अभी से. गिव योरसेल्फ टाइम टू लर्न एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री. कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे कंपनीज काम करती हैं, वो सब अपने आप को टाइम दो, अपना स्किल सेट डेवलप करो. ट्राई रीचिंग एट अ स्टेज कि कल को आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे देख के कोई आपको मना ही ना कर पाए कि यार ये बंदा मुझे चाहिए अपनी कंपनी में. Ask yourself, do you have that skill set right now? Are you a decent photographer? Do you know things about Himachal? Do you know things about different places? इंडिया में कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, कैसे ट्रिप्स होती हैं, आपने व्लॉग्स देखे हैं यूट्यूब पे इनफ अभी की नहीं, इंडिया में आप क्या क्या नया ला सकते हो. स्टार्ट थिंकिंग, आपके जो स्टार्टअप आइडियाज हैं वो सोचो. एंड स्टार्टअप आइडियाज आपको तभी समझ आएंगे जब आप देखोगे कि ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री में, इस कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो थ्रू योर मेथड्स. तो ये सब चीजों के लिए आपके पास बहुत टाइम है अभी, बिकॉज यू आर नॉट कंस्ट्रेंड. आपको ऑफिस के दिन भर का टेंशन नहीं है, आपको दिन भर ऑफिस में नहीं बैठना है, आपको शादी का टेंशन नहीं है अभी, एज बेसिक एज इट साउंड्स. यार आप इतने फ्री हो अभी कि आप ये सब चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो. So just give yourself that freedom कि हाँ, I want to learn new things right now, just focus on that. And once your skill set is developed, जो confidence आपके अंदर होगा ना कि आप कुछ भी फोड़ सकते हो लाइफ में, तो build that confidence. Just ask yourself if you have that confidence right now. If you do well and good, if you don't, build that. And you will build confidence only when you learn things and only once you grow those skill sets. Yeah, thank you. निकलो यार, निकलो, जस्ट लीव, निकलो, जस्ट कोई भी वीकेंड उठाओ, एक दिन की ट्रिप उठा लो, दिल्ली एक्सप्लोर करो यार. दिल्ली में कितना कुछ है. आई एम श्योर यू गाइस हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दिल्ली. मेट्रो का टिकट 40-50 रुपए का आता है, उतना आई एम श्योर एवरीवन कैन अफोर्ड राइट नाउ. निकलो, हर चीज देखो. दिल्ली की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इतनी है, वो किसी को नहीं पता है. दिल्ली में सब कुछ है, सब कुछ. जस्ट एक्सप्लोर दिल्ली. आप व्लॉग्स बनाओ, आप रील्स बनाओ, दिल्ली पे बनाओ, आप उससे वायरल हो सकते हो. जस्ट गो फॉर One इट more यार. question. Delhi explore करने के लिए भी like how do you get a confidence to explore solo? Because वो Again, भी एक as a girl, I बड़ी think you will problem have होती to है. match those timings very well because there are things that you can do. आप दिन में travel करो. Nobody is telling you to explore overnight. आप metro में there's a women compartment if you feel unsafe in general metro. Utilize that. And metro tickets are cheap. You can travel from. I see so many girls traveling in general compartment today. But अगर आपको निकलना है, you will have to put that fear behind firstly. No, कि you didn't get my question. Actually, I asked सोलो ट्रैवल करने के लिए हाउ डू वी गेट दैट कॉन्फिडेंस, मतलब बिकॉज ऐसा होता है कि अगर हम लोग कहीं अकेले जाते तो वी फील शाय ऐसे What do you अकेले feel घूमने shy? में। क्या क्या करने में शाय? आपको रिक्शा लेने में शर्म आ रही है? आपको यहाँ से वहां चलने में शर्म आ रही है? किस चीज में शर्म आ रही है? बताओ आप मुझे. मतलब सपोज इफ यू आर गोइंग टू रेड फोर्ट, ठीक है, करेक्ट. अकेले, देयर इज नो फ्रेंड, नो वन विद मी, और मुझे कंटेंट भी बनाना है खुद के लिए और एक्सप्लोर भी करना है, तो हाउ डू वी डू दैट? मतलब क्योंकि हाँ, वी गेट शाय, ऐसे लोग देख रहे हैं. ठीक है. तो इट्स वेरी कॉमन टू फील शाय एज अ कंटेंट क्रिएटर कि लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं. बट आप जब वो एक वीडियो बना लोगे और वहां से आ जाओगे और आपको शाम में अपने रूम में बैठ के रियलाइज होगा कि तुम्हें उस बंदे की शक्ल भी नहीं याद है जो तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें जज कर रहा है उस पॉइंट. एंड द सेम इज फॉर दैट पर्सन. दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू रिमेंबर हु साक्षी इज. ही डजंट इवन नो योर नेम. तो इन दैट मोमेंट हमें बहुत लगता है कि लोग क्या सोचेंगे. बट अगर आपका पर्पस आपके दिमाग में है कि मुझे एक वीडियो बना के निकलना है यहाँ से, मैं उस वीडियो में बोल रही हूँ हाय फ्रेंड्स, ये सब भी बोल रही हूँ, जिसपे लोग जज करने का आपको लगता है कि लोग जज करेंगे कि ये सब क्या चल रहा है, हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है. अगर आप वो सोच के बैठ जाओगे तो यार फिर आप बस जाओगे, दूसरों को ऐसे रिकॉर्ड करके वापस आ जाओगे. आई एम टेलिंग यू, nobody remembers, nobody cares उतना. Again, I'm not saying it in a negative way, but nobody is there to judge you. अगर आपने किसी ने आपको जज भी किया, that's completely okay. You don't know that person doesn't know you. आपका eventual जो ऑडियंस होने वाला है ना, वो लाखों करोड़ों का होने वाला है. उस एक बंदे ने अगर आज जज कर लिया, बट उसके बदले आपको 1000 व्यूज आ गए किसी चीज पे, your purpose is solved. Don't fear being judged. Don't fear कि लोग क्या सोचेंगे. Let people think. They will anyway think. तुम करो चीज, ना करो चीज, तुम जाके आ जाओ.
तुम्हारी लाइफ में उनकी सोच से अगर फर्क पड़ रहा है, देन it's a very wrong mentality to develop in the initial phase because you have so much to capture, you have so much to develop. And अगर आप एक वीडियो आपने शूट नहीं किया ये सोचते हुए कि 3 लोग सामने से देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, then you're missing out थोड़ा बहुत. Just think about it, just give it more thought कि अगर तुम वो एक इंसान हो वहां पे and you are seeing someone shoot like this, will you come back at home and talk about that person कि हाँ यार, तुम किसी को और को बताओगी, तुम तनीषा तुम्हारे बगल में, तुम उसको बताओगी यार तनीषा मैंने एक लड़की देखी थी जो ऐसे करी थी, मुझे बड़ी फनी लगी, बट तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं पता, तुम तनीषा को क्या दिखाओगी, कौन है वो बंदी? She will not know, you will not remember, you will move on with your life. Yeah. That is how that person will also think. So don't think that यार, I mean it's very normal to think that way, a lot of us do that. हम किसी को कैमरा पकड़ाने से पहले भी सोचते हैं कि यार हमारी फोटो ले दो, उससे पहले सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा. But that's okay. I mean, you will have to build in that attitude धीरे धीरे कि यार let people judge. It's okay. I have nothing to lose. What do you have to lose? तुम बहुत famous हो अभी, तुम्हारे बारे में कोई story डाल देगा, कुछ नहीं कर पाएगा. Again that question. What is it that I have to lose? Nothing. Adding to Sakshi's question that she said कि how to travel solo और बहुत weird लगता है कि मतलब जब लोग आपको देख रहे हैं, but मुझे लगता है like for example if you're traveling in a group then how to communicate or like talk to people, like sometimes you feel uncomfortable like क्या बात करें, किसी से क्या पूछे, तो like how to connect with people and like एक bond बनाए. Are you referring to group trips या फिर friends के साथ when you're traveling? Like I'm referring to like आप unknown people के साथ travel कर रहे, like आप group Correct. travel without Correct. friends. So this is the question that we get almost before every trip कि someone who's a solo introverted traveler वो ट्रिप पे आएगा and अचानक उसके सामने 20 लोग हैं जिसको वो नहीं जानता है. How do they take that first step? How do they start talking to them? And I think that is where the role of a trip leader becomes very important, to create an environment where everyone feels कि there is going to be no judgment. One thing that you will have to tell your head is कि आप अगर उस ट्रिप पे गए हो 20 अनजान लोगों से मिलने, तो सामने वाला इंसान भी 20 अनजान लोगों से मिलने आया है. That person also doesn't know everyone over there. That person also has a lot of thoughts in their head. They might be an extrovert, but still everyone next to them is a new face. An extrovert also is always scared of being judged. An introvert is being scared of judged. Everyone is feeling the same fear कि सामने वाला क्या सोचेगा इस मोमेंट में. In that moment, a genuine suggestion that I have is don't have to start talking to everyone. आप अपना एक comfort zone कहीं पे ढूंढ लो. If you find that one person who you can open up to, you will eventually open up to a third person, a fourth person. And on these group trips, that is exactly what the role of a trip leader is, to create an environment where everyone feels comfortable sharing about things. We've had people on our trips, 3 दिन की trip में, who have, I mean, almost on every trip and almost every person who has opened up entirely about their lives. And the best thing about traveling with strangers is that there is no judgment. And trust me on that, there is no judgment. There is no baggage. Nobody knows your story. If you watch Tamasha, उसमें starting में होता है ना कि मेरी कहानी कुछ भी हो सकती है, तुम्हें नहीं पता है अभी. I can portray myself to be an extrovert today, even if I'm an introvert. मैं कुछ भी portray कर सकता हूँ. That's the beauty of traveling with strangers. There is no baggage. They don't know your story. They are not going to judge you because they have their own demons. They have their own fears. They have their oन pains जिसके लिए वो ट्रिप पे आए. So everyone's feeling the same thing. Just take that initial plunge. आप पहली ट्रिप पे शाय होगे. आप एक दोस्त बनाओगे उस ट्रिप पे, but that one friend is going to be enough for you to feel कि हाँ, my trip was a success. आप नेक्स्ट ट्रिप पे जाओगे, you will feel that confidence कि हाँ, अब मैं 3 लोगों से और बात कर सकता हूँ because last ट्रिप पे I observed people doing it. I spoke to one person, it connected. So it doesn't have to be a one night wonder again कि एक ट्रिप पे गए and सब कुछ हो गया आपके साथ. Go on multiple trips. You will start opening up. The more you travel, the more confidence you will gain. And that is what happened with me. I was an introvert when I started out. I took time to talk to people. But eventually, once I saw that change कि हाँ यार, I can talk to people and it's not harming me in any way. कुछ बहुत गंदा नहीं हो गया मेरे साथ अगर मैंने किसी से जाके hi hello कर लिया. And once you develop that feeling, with time, it will become easy and you will grow in confidence. You don't have to be 100% confident when you start out. It will grow with your experiences. So don't expect कि सब कुछ ऐसे ऐसे होगा. चीजें ऐसे ऐसे होंगी. And that's okay. Any questions कुछ भी हो? I think we've gone over time थोड़ा.
Again, I think Sakshi has sent my Instagram ID, तो feel free to DM किसी के दिमाग में कुछ भी हो. अभी कुछ बहुत urgent question है तो go for it. Happy to help. I guess और नहीं है. Take your time, think about it. सोचना कुछ भी question हो, feel free. I guess सबके doubts सब clear हो गए. And यार कोई भी Instagram पे message करो ना तो बस बता देना that I was in this class so that I will know कि someone's following या if I have to check someone's account या कुछ भी. I guess all good. I guess that's it for today. Yeah. Thank you so much, sir, for this amazing session. We loved it. Stop calling me sir, please. Okay, And sorry. guys, just enjoy this journey. Enjoy your college life जितना हो सके. Best time of your life probably. So just enjoy everything. यार pressure मत लो कि चीजें कैसी होंगी, सब हो जाएगा. कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. Hi Sukla sir, Yogesh this side. Hi योगेश सर, बताइए. Hi sir. सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा आप सजेस्ट करेंगे उसके बारे में बिकॉज आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और अभी मैंने आपकी ऑन कॉल आपकी मीटिंग के साथ साथ मैं आपका पोर्टफोलियो सारा देखा, मैंने जाके वेबसाइट गूगल पे गूगल किया आपकी और जो मैम की स्टोरी. गूगल पे भी हो गया मैं. हाँ सर. हाँ गूगल पे भी हो गया मैं. हाँ सर बिल्कुल. तो मैंने Okay. चेक किया, अभी सारा मैंने स्टोरी पढ़ी तो मेरे को अच्छा लगा सर. बट आप मेरे को कुछ गाइडेंस कीजिए कि जैसे अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है टूरिज्म मैनेजमेंट में CBS कॉलेज से, और लास्ट 6 मंथ्स पहले मैंने सोचा था कि मेरे को इसी इंडस्ट्री में कुछ करना है. और क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले देखा था कि ग्रुप में भी देखते हैं बट इतना ज़्यादा किसी का एफर्ट्स नहीं था. फिर वही है कि हम किसी को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं कर सकते. तो मैंने अपना खुद का व्यूज रखे और मैंने अब सॉरी अपने लेवल पे मैंने मेक माई ट्रिप ज्वाइन की. और मेक माई ट्रिप में मैंने 6 मंथ्स जॉब की इंटरनेशनल फ्लाइट प्रोसेस में ऑपरेशंस के अंदर एज. तो मैंने सर उसके अंदर 6 मंथ्स लगाए. मैंने GDS और LCC जो 2 सॉफ्टवेयर यूज करती है गैलीलियो एमएडीएस ऑपरेशंस के अंदर मैंने अच्छे से सीखे और एनवायरनमेंट काफी अच्छा था. ठीक है सर. और 6 मंथ्स मैंने मेरा जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया तो मेरा उसी टाइम क्लियर व्यू था कि मेरे को 6 मंथ्स करना है और मेरे को यहाँ से ड्रॉप आउट लेना है. ठीक है. बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन अभी मई में कंप्लीट हो जाएगी तो एग्जाम्स भी है, इसलिए मैंने 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेना था कि अगर कॉलेज में कोई कंपनी अच्छी आती है, अगर मेरे को अच्छा स्कोप देती है, अगर मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं वहां से पिक कर लूंगा कि. और जो मेरे साथ के फ्रेंड्स होंगे वो सारे एज ए फ्रेशर होंगे बट मैं एज ए एक्सपीरियंस होऊंगा क्योंकि मेरा 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है. और वो सर मेरा काफी बेनिफिट कर रहा है कि वो चीजें हैं मैंने जो सीख ली है. तो उसके लिए मेरे को उस कंपनी में आगे कुछ इतना ज्यादा दिख नहीं रहा था. उसी केवल सेम प्रोसेस के अंदर कुछ नई चीजें नहीं मिल रही थी मेरे को सीखने के लिए. तो मैंने वो लेफ्ट आउट कर दिया और अभी एग्जाम्स है 1 मंथ. तो मेरा यही क्लियर है कि मैं 1 मंथ कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सर्च करूंगा. जैसे कि सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, अदर स्टेट्स की टूरिज्म की वेबसाइट्स है, राजस्थान टूरिज्म, उत्तराखंड, सबकी मैं वेबसाइट्स डेली नहीं कह सकता, हर या 2 या 3 दिन में मैं विजिट करता हूँ साइट्स. अमेरिकन एम्बेसी, US एम्बेसी, कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिए क्या स्कोप है, यूनाइटेड नेशंस क्या देख रहे हैं या किन का क्या बजट कितना आया है, क्या क्या चीजें. तो सर इन सब चीजों के अलावा भी मेरे को मतलब देखना करना, बट फिर भी एक होता ना सर कि एक इतनी सारी सक्सेस इजीली नहीं मिल पाएगी, ये तो देख लिया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो वही है सर कि इसके बारे में आपको क्या लगता है. अभी मैं कुछ और जगह भी जा रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू क्लियर भी हो रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं, बट वो ये कहीं सैलरी का इशू आता है. जहां मेरे को पहले मिल रही थी तो सेम नहीं दे रहे, कोई थोड़ा कम दे रहा है, कोई थोड़ा ज्यादा दे रहा है. तो यही सोच रहा था कि सर इसमें क्या करना चाहिए. अभी मैं एक प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ ऐसा कि कोई इस चीज में थोड़ा सपोर्ट करे कि मतलब एज ए गाइडेंस ओनली इन दिस. तो आप इसमें थोड़ा व्यू देंगे सर अपना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. And I think योगेश फर्स्टली जो आपने लास्ट में चीज बोली ना कि स्ट्रगल एंड वो सब चीजें अभी हैं, एंड स्ट्रगल रहेगा बिकॉज मेरी आवाज आ रही है.
यस सर, आ रही है। हाँ, तो आई थिंक आप खुद से एक चीज पूछो कि आप आज जो भी हो, जितना भी आपका पोर्टफोलियो है, कल को 24 आवर्स, कल आपको किसी कंपनी ने हायर कर लिया है ना, आपको वो 20 से 25 लाख दे रही है साल का ओवरनाइट, ठीक है, बिना कुछ ट्रैवल, बिना कुछ पोर्टफोलियो बिल्डअप, बिना कुछ 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 किए, हाउ विल यू फील? योगेश? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जो ये स्ट्रगल वाला चीज होता है ना, कि स्ट्रगल थोड़े टाइम रहेगा, थोड़े टाइम, आई थिंक जो चीजें आपको स्ट्रगल सिखा सकती है वो आपको सक्सेस भी नहीं सिखा पाएगी। जो चीजें आप अगले 6 महीने में बिल्ड करके किसी जगह पहुंचोगे वर्सेस आप ओवरनाइट कल उस जगह पहुंच जाओगे, जो आपका जर्नी होगा ना, जो आपकी स्टोरी है, वो 6 महीने वाली बहुत बेटर होगी। I'm not glorifying struggle. I'm not saying कि struggle is the way to success. But अगर struggle हो रहा है अभी, don't look at it in a negative way. Don't look at it कि हाँ सब चीजें अभी क्यों नहीं figure out हो रही। अगर आपका पोर्टफोलियो जैसा आपने बोला मेक माई ट्रिप की वजह से डेवलप हुआ, you thought you had an advantage, but then वो advantage चला गया, कंपनीज ने कम ऑफर किया, that is going to happen because you are a fresher. आप स्टार्ट कर रहे हो अभी एंड कंपनीज विल probably लाइक चूज पीपल जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ओवर यू, चूज पीपल जिन्होंने बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में, दे विल पे देम मोर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप वो चीजें स्किल से डेवलप करते जाओगे, ऑब्वियसली आपका पे, जो आपका, डोंट टेक इट इन एनी अदर वे, बट जो आपका रेट है दैट विल इंक्रीज इन द मार्केट, एंड दैट इज व्हाट यू विल हैव टू बिल्ड ऑन इन सम टाइम। आई विल सजेस्ट आप, मैं अपना नंबर बता दे रहा हूँ सबको ही, यू कैन फील फ्री टू व्हाट्सएप, एंड आप अपना रेज्यूमेज मेरे साथ शेयर कर दो। आई कैन टेल यू व्हाट मोर यू कैन बिल्ड अप, कंसिडरिंग कि आप क्या ढूंढ रहे हो उस इंडस्ट्री में। अगर आपको ये पता है कि आपको किस जगह पहुंच, मैंने अपना नंबर डाल दिया, आपको अगर पता है कि आपको किस जगह पहुंचना है, उस चीज के लिए आपका रिज्यूमे उतना है कि नहीं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको मेक माई ट्रिप से 6 महीने आपने कोई चीज सीखी, बट दैट थिंग इज नॉट इनफ टू गेट यू अ जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हो, देन यू विल हैव टू सी कि क्या डिफरेंसेस है दोनों जॉब्स में, क्या नए स्किल सेट्स मुझे चाहिए इस जॉब के लिए जो मेक माई ट्रिप से मुझे नहीं मिले। मेक माई ट्रिप इज अ ग्रेट कंपनी ऑन योर पोर्टफोलियो, बट आपने जो 6 महीने वहां किया, जरूरी नहीं है वही चीज हर कंपनी में चाहिए हो। So that difference you will have to identify and build that skill set, and eventually your price will increase. अगर आप उस चीज की deliverables दे पा रहे हो किसी कंपनी को कि वो डिपेंडेंसी आप पे है कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, then obviously that company will pay you for it, and that company should be making enough also for it. अगर आप किसी भी नई कंपनी जो आज स्टार्ट हुई है उसके पास जाओगे और उससे बोलोगे कि मेरा इतना स्किल सेट है, स्टार्ट पेइंग टू मी, वो कैसे पे करेंगे? उनके पास है ही नहीं पैसे आपको पे करने के लिए, क्यों पे करेंगे? वो कैसे पे कर पाएंगे आपको? सो दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू बी स्मार्ट अबाउट कि किस कंपनी में अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी क्या क्या ऑफर है, किस कंपनी का ग्रोथ किस दर जा रहा है। अगर कोई एक डेड एंड कंपनी है, चाहे वो बहुत कमा रही हो आज, तो उसका कोई पॉइंट नहीं आपको वहां अप्लाई करने का। यू विल हैव टू सी कौन सी कंपनी में ग्रोथ आपके लिए है, कौन से नए सेक्टर्स वो कंपनी ला रही है। आप मेक माई ट्रिप में ही हजारों सेक्टर्स होंगे, बहुत सी ऐसी कंपनी हजारों सेक्टर्स होंगे, ऐसे सेक्टर्स ढूंढो आप जहाँ पे आपका वैल्यू हो वहां पे। अगर आप कोई नई कंपनी एकदम जो कल खड़ी हुई है उसमें आप अप्लाई करोगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको बहुत पे करेंगे। ऐसी कंपनीज के साथ आपको चलना पड़ता है बहुत टाइम तक टू गेट दैट मनी। तो आप, मैंने अपना शेयर कर दिया नंबर, फील फ्री टू सेंड माई योर पोर्टफोलियो, जो आपने कहा कि आप अप्लाई कर रहे हो बट चीजें समझ नहीं आ रही। आई विल गो थ्रू योर पोर्टफोलियो एंड आई विल हेल्प यू, जो भी है। ओके सर। एक्चुअली सर मैंने स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स भी किया था, जो स्कूल हम्म। ऑफ फॉरेन लैंग्वेज है लोधी गार्डन के पास, तो बिफोर आप 2 इयर्स अ, बैक। हाँ, तो अब अगेन आपको वही सोचना पड़ेगा ना कि स्पेनिश आपने सीख ली, बट किस कंपनी में उसका यूज है। अगर स्पेन की कोई ट्रैवल एजेंट्स हैं, किसी के स्पेन की ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सिर्फ वहां पे हेल्प आ पाएगी ये चीज। तो हर कंपनी के लिए आप वो बहुत बड़ा एसेट नहीं है कि आप, आपको स्पेनिश आती है तो इसलिए वो आपको पे करेंगे। यू विल हैव टू फाइंड आउट कौन सी कंपनी यूरोप की ट्रिप्स कराती है, कौन सी कंपनी स्पेन की ट्रिप्स कराती है, मैं किस कंपनी के लिए स्पेन का ट्रैवल एजेंट हो सकता हूँ। दीज थिंग्स यू विल हैव टू फिगर आउट इफ यू लर्निंग दो स्किल सेट्स। तो वही है कि आप, जैसे अब स्पेनिश वाली चीज हमारी कंपनी में अभी कोई यूज नहीं है बिकॉज हम स्पेन की ट्रिप्स नहीं करते, तो यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पे वो स्कोप है। तो स्मार्ट होना पड़ेगा थोड़ा एप्लीकेशंस के बारे में, हर चीज के बारे में, एंड दैट हैपेंस विद टाइम, वो हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, यू जस्ट अ फ्रेशर, तो चीजें सब कुछ हो जाएगा फिगर आउट अभी। ओके सर। एंड या आप व्हाट्सएप कर देना मुझे प्लीज। श्योर। So no, I guess let's end this for today.
and hopefully we'll stay in touch. Hopefully we'll meet all of you somewhere. You're travelers, I'm a traveler. Definitely कहीं ना कहीं मिलेंगे. Yes, sir. Also, one more suggestion, one more request I have from everyone. Since we are a travel company, we are also starting out. It's been a few months. अगर किसी के दिमाग में भी कोई भी आइडिया है नई चीज करने का, तो हेल्प मतलब not a help, but like feel free to reach out to us and suggest all of that, and let's see how we can inculcate that, how we can involve you in that process. And it can be a project for anyone, it can be a good opportunity for anyone. कुछ भी possible options हैं आपके पास, अगर आप DU में हो, कुछ भी हो, if you feel that you can help us in any way, कोई एक बड़ा students का trip हो सकता है या बहुत सारे नए ideas आपके दिमाग में आएंगे, you're a fresher, feel free to shoot them at us and we will try and inculcate and include you in whichever best way possible in that. Just सोचो, अपने दिमाग चलाओ, प्रॉब्लम्स ढूंढो हर जगह, थिंक कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या इश्यूज हैं, क्या आप बेटर दे सकते हो और डिफरेंट दे सकते हो. इट्स अ ग्रेट थिंग यार. आप बस सोचो, आपको बैठना है और सोचना है और कुछ नहीं करना. बिगेस्ट एडवांटेज विद यू इज योर एज राइट नाउ. चलो, thank you so much everyone for joining. It was lovely to see so many good faces, new faces, and hopefully we'll stay in touch. Hopefully we'll get inspired from each other. Yes, sir. Thank you. It was an amazing session, sir. We also सर loved मत it. बोलो यार तुम. Sorry. अचानक से बहुत बड़ा बड़ा फील होता है. Thank you, Carmen. Thank It's you so very much. grateful to have you here. Thank you. Thanks Anisha, thank you so much. Thank you, Ananya. Sir, like it was really glad to have you, and thank you for your wise words. I'm really Thanks, glad Aryan. that you just came over and made us understand like how tourism, your company works and how everything functions out. Thank you for explaining it all to us. Thanks Aryan, thank you so much. Thank you so much, sir. Thanks Agesh, thank you everyone, thank you. Lovely speaking to all of you, and definitely let's stay in touch. Thank you. Bye bye everyone.